दोबारा स्टार्ट कर दिया। ओके, अब लाइव हुआ है। Okay, ma'am. Earlier we were not live, so now I will start the session by welcoming my guru and mentor, Professor Anamika Roy, ma'am. And before I start this session, I wish to introduce Professor Anamika Roy to all the participants and all the persons those who are joined us online. Professor Anamika Roy is my guru and my mentor, my guide, and she has taught us so nicely that we have developed the interest in the field of history and archaeology. So, ma'am, I welcome you on this online session as a chairperson. And we have, ma'am, 8 participants in this session. The participants are Suresh Kumar Singh, IAS officer. He is retired IAS officer and former Secretary of UP Public Service Commission, Prayagraj. Second is Dr. Birendranath Prasad. He is Assistant Professor, Center of Historical Studies, JNU, New Delhi. Then we have Dr. Ruchi Srivastav, Assistant Professor, Ancient History, Mahila Degree College, Basti. Then we have Amrita Johnson, Hilalal Ramnivas PG College, Siddharth University. Then Nishant Singh, Jodape, Department of Ancient History, Culture and Archaeology, Vishwabharati Santiniketan, West Bengal. Then Dr. Ratna Singh, member, Heritage Society, UP Circuit. Then Inder Chaudhary, National Chukchi University, Taiwan. Then Migyu Tha, Vietnam. So we have, ma'am, 8 papers in this session. I welcome Sri Suresh Kumar Singh, retired IAS officer, and he will be starting his session. Good afternoon, ma'am. This is S.K. Singh, and my topic is ओंकार और उसकी महिमा. The sound is called Pranav or Brahm. This is the primordial sound, first sound present in all beings. All mantras begin with sound Om. All languages, first alphabet अक्षर is A. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी भाषा में, लिपि में पहला अक्षर जो है अ से होता है, और ओम को ओरिजिनल साउंड कहा जाता है. पतंजलि के योग सूत्र में अध्याय 1 के 27 सूत्र में ये मिलता है कि तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात ईश्वर का एक नाम प्रणव है. मीनिंग देयर बाय ओम इज द वर्ड ऑफ डिनोटिंग गॉड. ओमकार मंत्र की जो गायत्री है वो इस प्रकार से है: ओमकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नो प्रणवः प्रचोदयात्. मीन्स वन वर्ड कंप्राइजेस द मीनिंग ऑफ द होल यूनिवर्स. ये गायत्री ओम मंत्र की गायत्री के नाम से कहा जाता है. सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये आता है कि मंत्र किसे कहते हैं. तो मननात् त्रायते इति मंत्र है. जिसके मनन से त्राण या मुक्ति मिलती है वह मंत्र है. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मंत्र के कई स्तर होते हैं, जैसे स्पष्ट उच्चारण और उपांश, मनन और चिंतन. किसी भी मंत्र के कुल 11 अंग होते हैं, जिनमें विनियोग, ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति, कीलक, कवच, अर्गला, तत्व और वेद. जितने भी मंत्र हैं सबके अलग अलग ऋषि होते हैं, सबका अलग विनियोग होता है, सबके अलग छंद होते हैं. सभी मंत्रों में ओम मंत्र को महामंत्र का दर्जा दिया गया है. हम सब लोग अवगत हैं कि वेद के सभी वाक्य या श्लोक मंत्र हैं. इनका मूल मंत्र ओम है, जो प्रायः किसी मंत्र का अंग नहीं है, किंतु पाठ के समय ओम से ही मंत्र का आरंभ होता है. ब्रह्मा के मुख से ओम तथा अथ का प्रथम उच्चारण हुआ था, अतः ये मांगलिक शब्द माने जाते हैं. ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य में पहला ही सूक्त है कि ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्राह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ येन मांगलिका उभौ. अर्थात अव्यक्त ध्वनि से ओंकार उत्पत्ति का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है.
इसे वेद तथा मनुष्य नमन करते हैं, नव जाते हैं, झुक जाते हैं, इसे प्रणव कहा जाता है। प्रणव उपनिषद में उनके संबंध में व्यापक रूप से चर्चा मिलती है। जो दूसरा मंत्र का वो इस प्रकार है, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म यद उक्तम ब्रह्म विधिः शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थान कालत्रयं तथा। इस मंत्र में ओम की व्याख्या की गई है और ब्रह्म के रूप में मानते हुए इसका जो शरीर है उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। ओंकार को परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। इनके शरीर, स्थान और काल का विवरण इस प्रकार से है। अ, उ, म 3 अक्षरों से ओम की रचना हुई है। तो इसमें जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें स्वर विज्ञान, अनुदात्त और स्वरित तीनों मुख्य देवताओं के क्रम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वेद त्रयी के क्रम में ऋक, यजु, साम तथा जो हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं जीवन की, जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के प्रतीक हैं ये तीनों अक्षर। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। ये अ, उ और म ये 3 ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गायत्री मंत्र के शुरू के 3 मंत्र भू, भू, स्वः, इसी प्रकार से ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र और अग्नि तथा 3 बिंदुओं के रूप में अ, उ, म ये 3 बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा लोक में पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग रूपक के रूप में ओम को जाना जाता है। काल विभाजन के क्रम में भूत, वर्तमान, भविष्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अगर हम सृष्टि के उद्भव और क्रमिक विकास की बात करें तो वैयाकरणों के माध्यम से तो पतंजलि, भर्तृहरि आदि विद्वान हैं जो शब्द के अनुसार इस सृष्टि का उद्भव मानते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि सबसे पहले नाद की उत्पत्ति हुई, नाद से ध्वनि की उत्पत्ति हुई, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से मातृका वर्ण और मातृका से शब्द, शब्द से वर्ण, वर्णों को मिला करके मंत्र और मंत्र के बाद ब्रह्म और उससे शब्द ब्रह्म की सृष्टि होती है। अब शब्द से ब्रह्म की उत्पत्ति और सृष्टि के विकास के संबंध में पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेख मिलता है कि स्फोटः शब्दः ध्वनि शब्द गुणा। ये स्फोट जो है वो शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण है। इसी प्रकार से भर्तृहरि के वाक्यपदीयम में स्फोट सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सृष्टि के उद्भव के क्रम में जो स्फोटायन का सिद्धांत है, जो ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु पहले जड़ की अवस्था में रहती है, बाद में जब स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसमें विघटन होता है और इसी विघटन से शब्द की उत्पत्ति होती है, जिससे आगे चल करके सृष्टि का विकास होता है। ये शब्द ब्रह्म और मंत्र विज्ञान एक अलग विषय है, जिसमें किस प्रकार से स्फोट के माध्यम से शब्द और शब्द के माध्यम से सृष्टि होती है, इस पर विस्तृत रूप से वैयाकरणों का मत है। और परब्रह्म के रूप में शब्दों को ही मानते हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सारे शब्दों में शब्द की उत्पत्ति का स्रोत ओम है, तो इस प्रकार से ओम को परब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। प्रश्न उपनिषद में एक प्रकरण मिलता है जिसमें महर्षि विप्लाद से सत्यकाम प्रश्न पूछते हैं और 5वें प्रश्न में उन्होंने ओम की महत्ता के बारे में किया। तो महर्षि विप्लाद ने कहा कि हे सत्यकाम, यह ओंकार ही निश्चित रूप से परब्रह्म और अपर ब्रह्म है। अतः जो विद्वान इसे जानता है वह इनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथ हैनम शैव्यः सत्यकामः प्रपक्ष स यो ह वै तद भगवन् मनुष्येषु प्रायणांत ओंकारम अविद्यात्।
कतमम वावस तेन लोकम जयत इति तस्मै स होवाच। महर्षि पिपलाद कहते हैं कि तस्मै स होवाच एतदेव सत्यकाम परम च ब्रह्म यद ओंकार तस्मात् विद्वान एवातनैक मनन परेत। इसी प्रकार से अक्षमालिका में ये विवरण मिलता है। इसका जो पहला मंत्र है वो ये है कि ओंकार मृत्युंजय सर्वव्यापक प्रतिष्ठ। ऋषि कहते हैं कि हे अकार, ओंकार का पहला अक्षर जो अ है, जो माला का पहली मनका होती है, वो प्रार्थना करते हैं अ अक्षर से कि ओंकार आप, हे ओंकार आप मृत्युंजय हो, मृत्यु का नाश करने वाले हो, सर्वव्यापी हो, तो मनके की जो माला की प्रथम मनका है उसमें आप प्रतिष्ठित हो जाइए। यानी जब भी हम माला लेकर करते हैं तो प्राकारांतर से हम ओम का स्मरण करते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में दूसरे मंत्र में ये कहा गया है कि बीजाक्षरम परम बिंदुम नादो तस्य उपरि स्थितम शब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। इसका भावार्थ यह है कि बीजाक्षर माने ओंकार से परे बिंदु स्थित है और बिंदु के ऊपर नाद विद्यमान है, जिसमें मनोहर ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद के नाम से जानी गई है। इसका एक उदाहरण इसी उपनिषद में मिलता है आगे के मंत्रों में। उसकी ओम के ध्वनि के उच्चारण की तुलना कांसे के घंटे से की गई है। जैसे कांसे की घंटे में जो ध्वनि होती है, तो आप देखिए कि लास्ट में ध्वनि का जब विलय होता है शून्य में, आकाश तत्व में, तो जिस प्रकार से वो विलय होता है उसी से ओम का आखिरी अक्षर जब हम न का उच्चारण करते हैं तो वो विलय जैसे कि घंटे की ध्वनि के लास्ट में आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। ये कहा गया है नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन की स्थिति होती है वही परम पद के नाम से जानी जाती है। ध्यान बिंदु उपनिषद के 9, 10, 11 मंत्रों में ये कहा गया है कि ओम उत्तेकाक्षरम ब्रह्म ध्येयम सर्वम निश्चय ऋग्वेदो भूर्त्येव पितामहः अकारे तु लयम प्राप्ते प्रथमे प्रणव वांसके अंतरिक्षम यजुर्भायो भुवो विष्णु जनार्दनः उकारे तु लयम प्राप्ते द्वितीये प्रणवांसके द्वयौ सूर्ये सामवेदश्च स्वरित्येव महेश्वरः मकारे तु लयम प्राप्ते तृतीये प्राण वंशके। ये कहते हैं कि ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है। दूसरे उकार में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः तथा जनार्दन विष्णु का लय होता है और तृतीय अंश मकार में देव, सूर्य, महेश्वर का लय होता है। मांडुक्य उपनिषद में पहले ही मंत्र में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है जो मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वतस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकारेव यश्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकारेव। ये कहते हैं कि यह अक्षर अविनाशी और ब्रह्म का प्रतीक है। उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। भूत, भविष्यत और वर्तमान 3 कालों वाला यह संसार भी ओंकार ही है और 3 कालों से अन्य जो भी तत्व हैं वह भी ओंकार हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये काल की जो 3 विभेद किए गए हैं वो तीनों इसी ओंकार में ही सन्निहित हैं। मांडुक्य उपनिषद में 8वें मंत्र में बहुत विस्तार से ओम को परिभाषित किया गया है। ऋषि कहते हैं कि सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो मात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार। वह ब्रह्म और यह आत्मा अक्षर ओंकार रूप ही है। यह ओंकार मात्राओं में सन्निहित है
इसकी मात्राएं ही इसके चरण हैं और इसके चरण ही इसकी मात्राएं हैं। मात्राएं अकार, उकार और मकार हैं। इस मंत्र का साइंटिफिक वर्जन है तो मैं इस प्रकार से प्रस्तुत करूंगा। इस मंत्र में वर्णित ब्रह्म या आत्मा की मात्राएं अनेक अर्थों में प्रकट होती हैं। ओम 3 मात्राएं हैं, अ, उ, म। ये विश्व जो है वो थ्री डायमेंशनल है। अगर हम रिलेटिविटी की बात करें, सापेक्षिकता के सिद्धांत की, तो उसके क्रम में भी टाइम, समय, आयतन और भाष, ये जो 3 आयाम हैं, ये अ की 3 मात्राएं हैं। और समय भी जो भूत वर्तमान भविष्य 3 काल में विभाजित है, वो भी अ की 3 मात्राएं ही उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 आयाम होते हैं। इसी प्रकार से जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण हैं, ये इन्हीं 3 मात्राओं से प्रादुर्भूत हुए हैं। इस प्रकार ओम का यह मंत्र ब्रह्म की 3 मात्राओं में व्यक्त होता है और ये कथन मांडूक्य उपनिषद से प्रमाणित होता है। शिव अथर्व शीर्ष में एक मंत्र मिलता है जिसमें ऋषि कहते हैं, यह ओंकार प्रणव, यह प्रणव स सर्वव्यापी, यह सर्वव्यापी सो अनंत परब्रह्म। अर्थात जो ओंकार है वही प्रणव रूप है, वही सर्वव्यापी रूप है, और जो सर्वव्यापी है वही अनंत रूप है, यही परब्रह्म का रूप है। मैं अंत में गीता में जो ओम के संबंध में उद्धरण आए हैं और संक्षेप में उनकी ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्याय 8 के 13वें श्लोक में कहते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजत देहम स याति परमाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हुए और मुझे याद करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान ने ये कहा है कि अंतिम समय में अगर कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करे और वो नाभ चक्र में अ का, हृदय चक्र में उ का स्मरण करते हुए और ब्रह्म से प्राणों का विसर्जन करता है तो मुझे मेरे लोक को प्राप्त करता है। इसी अध्याय के अध्याय 9 के 17वें श्लोक में कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पिता हम अष्ट जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋषाम यजुरेव च। मैं जगत का माता पिता धाता पितामह जानने योग्य तथा ओंकार हूँ। गीता में ही श्लोक 25 में कहा गया है कि महर्षिणाम भृगुहम विराम सम्यक एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। मैं ऋषियों में भृगु हूँ, वाणी में ओंकार हूँ, यज्ञ में जप हूँ और जड़ पदार्थों में हिमालय हूँ। 23 और 17 श्लोक में भगवान कहते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्माण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्माणाम तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिते पुरा तस्मात् ओम इत्याद्यश्च यज्ञदानस्तप्ते विधाता ब्रह्मवादिनः। कहते हैं कि ओम तत्, ये 3 शब्द ब्रह्म को सूचित करने के लिए वैदिक मंत्र के उच्चारण क्योंकि प्रारंभ में प्रयोग होते हैं। अतः यज्ञ दान क्रियाओं का आरंभ से ही ओम से ही आरंभ करते हैं। जस्ट एक मिनट। अंत में जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंडांड में है। अगर हम कुंडलिनी चक्र के हिसाब से बात करें, चक्रों के हिसाब से, तो जो सृष्टि में प्रकृति के सारे तत्व हैं वो हमारी बॉडी में जो फ्लक्सुएशन में उद्धृत होता है। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो अ का उच्चारण हमारे नाभि से और उ का उच्चारण हृदय चक्र में और म का उच्चारण जो है आज्ञा चक्र से किया जाता है। इस प्रकार से मैंने ओम के संबंध में जो
शास्त्रों में मिलता है, वेद में, उपनिषद में, गीता में, ध्यान किया। मैंने अपने वक्तव्य में ये किया, इसका उद्भव और इसका विलय शब्द ब्रह्म के क्रम में होता है और सारे शब्दों की उत्पत्ति ओम से हुई है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम अल्पम तथायु बहवः च विघ्नाः सारम ततो ग्राहमपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। ये शब्द शास्त्र अनंत है, हमारी आयु बहुत कम है तथा बहुत सारे गुण हैं। तो इस प्रकार से जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें नीर छेर विवेक करने वाले हंस की भांति अपने अवधारणा के हिसाब से, जीवन दर्शन के हिसाब से हमें सार भाग को ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुरेश कुमार सिंह जी। अत्यंत विशद और वैदुष्यपूर्ण आपने पत्र पढ़ा। अब 1 मिनट का समय है, यदि इस पर कोई टिप्पणी, वैदुष्यपूर्ण टिप्पणी या कोई आपका प्रश्न है, एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट्स, बट बी ब्रीफ एंड पॉइंट एंड प्रिसाइज। क्वेश्चन नहीं, कोई बोल रही, किसी को पूछना है तो 1 मिनट पूछना। तो सब सही है। किसी को कुछ पूछना है? पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन। एनीवे, थैंक यू। क्योंकि हम लोग हाफ एन आवर बिहाइंड द शेड्यूल शुरू हुए हैं और 5:30 जो है इसका खत्म होने का समय है। श्री सुरेश कुमार सिंह ने बहुत सही समय पे लेकर के अपना वैदुष्यपूर्ण जो उन्होंने उनका संभाषण था उसे समाप्त किया है। समस्त वक्ताओं को अभी से बता दें कि 12 से 15 मिनट का समय मिलेगा। After 12 minutes, there will be a warning to sum up your paper, and there will be 1 minute for discussing the paper, and chairman's comments will be at the end of all the papers. Now the next speaker, Professor Neeta. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for the nice comments, ma'am. And please stick to the time, whatever madam has given to us. 12 minutes will be the final time. So please try to sum up your paper within that time limit only. So second speaker is Dr. Virendranath Prasad, Assistant Professor, Center of Historical Studies, JNU. अगर बीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हो तो प्लीज। वो नहीं जुड़ेंगे ना, जब आप जोड़ेंगे नीचे करिए, हमको डालेंगे उसमें। सेट करिए। Dr. Virendranath, I think he is with us. So I will be calling this Dr. Ruchi Srivastava, Assistant Professor. Yes, ma'am. Please. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Please start. Okay, thank you so much, ma'am. हो गया? हो गया? तो तुम वहीं बैठो ना, वहीं लिखो तुम। जहाँ रिपोर्ट है वहीं लिखिए। अपने सेशन के लिए। आदरणीय चेयरपर्सन मैम, आदरणीय नीता मैम तथा सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं नमस्कार करती हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा पेपर प्रेजेंट करने के लिए। मेरे पेपर का मेरे शोध का टॉपिक है प्राचीन वैदिक साहित्य में शिल्प शिक्षा, वैदिक वांग्मय में शिल्प शिक्षा। शिल्प शिक्षा की बात करने से पहले मैं थोड़ा आपका ध्यान शिल्प की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि प्राचीन भारत में शिल्प कितना विस्तृत एवं महत्वपूर्ण था। प्राचीन भारतीय शिल्प में पारंपरिक कल्पनाशीलता, सौंदर्यपरक और रूपगत की परंपरा मिलती है। शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप है जिसमें सत्यम, शिवम व सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। ऋग्वेद में 2 स्थलों पर सुशिल्प का संदर्भ मिलता है। सामान्यतः विद्वानों का विचार है कि इसकी व्युत्पत्ति वैदिक धातु पिंश से हुई है, जिसका अर्थ है रंगना, चित्र बनाना, कलाकारी करना, रचना आदि। पिंश से ही पेश, पिंशतु, सुपेश, पेशल आदि शब्द बने।
माना जाता है कि कालांतर में पेशल के वर्ण विपर्य से ही शिल्प शब्द का निर्माण हुआ। उत्तर वैदिक संहिताओं में यथा यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि में अनेक शिल्पों की सूची प्राप्त होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है आत्म संस्कृतिर्वाव शिल्पम, अर्थात शिल्प आत्म संस्कृति के पर्याय हैं। जहां तक शिल्प शिक्षा का प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा को दो भागों में बांटा गया, पराविद्या तथा अपराविद्या। शिल्पों की गणना अर्थात शिल्प शिक्षा जो दी जाती थी उसकी गणना अपराविद्या के अंतर्गत निहित थी। सामान्यतः शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वो विद्या है जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक चलती रहती है। व्यवहारतः कलाकार, चिकित्सक, अध्यापक, संगीतकार, व्यापारी, चित्रकार आदि को जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है वह केवल विद्यालय से प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि नित्य नए अनुभव ही उसके विस्तृत ज्ञान का आधार है। प्राचीन आचार्यों का कथन है, विप्र जीवन पर्यंत अध्ययन करता है। वैदिक युगीन शिल्प शिक्षा पर यही अर्थ अधिक सार्थक प्रतीत होता है। मानव संस्कृति के आरंभिक चरण में शिल्पों की शिक्षा स्वाभाविक रूप से वंशानुगत संस्कार एवं उपयोगी गुणों के सीखने की जिज्ञासा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था। आरंभिक शिक्षा माता पिता के अभिभावकों के घर पर रहते हुए ही प्राप्त होती रही। प्रारंभ में माता पिता ही शिल्पाचार्य की भूमिका निर्वहन करते थे। उदाहरण के तौर पर देवों, असुरों और मानवों की शिक्षा उनके पिता प्रजापति के आचार्यत्व में ही हुई। वैदिक साहित्य में प्रजापति और विश्वकर्मा को एक रूप बताया गया है। इस दृष्टि से विश्वकर्मा को प्रथम शिल्पाचार्य माना जा सकता है। धर्म सूत्रों में माता को एक श्रेष्ठ गुरु कहा गया है। महिलाएं अपने परिवार में ही अनेक शिल्पों यथा रंगाई, बुनाई, कताई, चित्रकारी आदि को सीखती थीं। कालांतर में शिक्षा में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति जब मान्य हुई तो शिल्पों की शिक्षा आचार्य गृह अथवा पाठशाला में दी जाने लगी। इस काल में व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार शिल्प का चयन करता था तथा सामान्यतः पिता ही अपने पुत्रों को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था। इस प्रकार समाज में शिल्प शिक्षा मुख्य रूप से वंशानुगत रूप से दी जाती रही तथा अनेक पीढ़ी का अनुभव नई संतति को प्रारंभ से ही प्राप्त होने लगा। ऋग्वेद में विविध प्रकार के शिल्पियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का नैसर्गिक वर्णन है। ऋषि का कथन है, मैं कारू हूँ अर्थात मैं शिल्पी हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं। हमारे विचार नाना प्रकार के हैं और हम अपनी अभीष्ट वस्तु की ओर उसी प्रकार दौड़ रहे हैं जिस प्रकार बछड़े गायों की ओर दौड़ते हैं। सामान्यतः समाज में जिन जिन शिल्पों की उपयोगिता बढ़ी उन्हें प्रोत्साहित किया गया। उदाहरणतः सामरिक कार्यों में रथों की उपयोगिता के कारण रथकार एवं बढ़ई की महत्ता को स्वीकार किया गया। लौह तत्व का ज्ञान होने पर सामरिक एवं कृषि क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता बढ़ी तो लुहारों को स्वाभाविक रूप से महत्व मिला। शिल्पी वर्ग जब अपने व्यक्तिगत प्रयासों से क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते तो समाज को विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने लगे, तब इनके व्यवसायिक महत्व को तत्कालीन समाज द्वारा स्वीकार किया गया। फलस्वरूप आनुवांशिक शिक्षा के अतिरिक्त गुरुकुलों में आचार्यों द्वारा भी इनकी शिक्षा दी जाने लगी एवं अनेक श्रेणी संगठनों की भी स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल में शिल्पियों का महत्व इतना बढ़ा कि तक्षा और रथकार को राजा के रत्नियों में शामिल किया गया। ऋभु जो कि कुशल शिल्पी थे, अपने हस्त लाघव के कारण देवत्व को प्राप्त हुए। ब्राह्मण एवं सूत्र काल में यज्ञों की महत्ता स्थापित होने के कारण यज्ञीय विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यथा यज्ञ संबंधी वेदियों के निर्माण के लिए रेखा गणित, ज्यामिति एवं गणित का साधारण ज्ञान आवश्यक समझा जाता था। इस युग में शिल्पों की शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाती थी, जहां शिक्षार्थी अपने गुरु के साथ विविध शिल्पों का अभ्यास करते थे। चूंकि शिल्प अत्यंत ही विस्तृत थे, वेदों में पारंगत होने के साथ साथ सभी शिल्पों में कुशलता प्राप्त करना असंभव था। अतः तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध केंद्रों पर विद्यार्थियों को किसी एक शिल्प में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक समझा गया। यदि नगर या गांव में शिल्पाचार्य कोई काम अपने हाथ में लेता था तो शिक्षार्थी अपने गुरु की सहायता करते थे। शिल्पों को सीखने के लिए विद्यार्थी दो प्रकार के थे। प्रथम वे छात्र जो अपने घरों में रहते थे और नियम से गुरु के घर जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरे वे छात्र जो गुरु के घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे, वे अंतेवासिन कहलाते थे।
वैदिक वाङ्मय में त्वष्टा, ऋभु आदि कुशल शिल्पियों का उल्लेख है, जिन्होंने इंद्र आदि देवों के लिए गृह आदि का निर्माण किया था। स्थापत्य के देवता के रूप में वास्तुस्पति देवता का वर्णन मिलता है। आगे चलकर ये समस्त शिल्पी विश्वकर्मा एवं मय की शिल्पाचार्य परंपरा में सम्मिलित हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का उच्चतम विकास था। भारतीय चिंतकों ने आत्मज्ञान की प्राप्ति भौतिक संबंधों के विच्छेद में नहीं, अपितु संबंधों के सम्यक परिज्ञान एवं निर्वहन में ढूंढा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मैम। Over to you, ma'am. Over to you, ma'am. You are मैम अपने को अनम्यूट करिए। हेलो अनामिका, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो आई थिंक अनामिका मैम, क्या हमसे लिंक टूट गया है क्या उनका? यस आई थिंक यस मैम। अनामिका मैम अभी मुझे दिख नहीं रही है। अनम्यूट मुझे दिख नहीं रही है। नहीं है आप आगे ओके, हो सकता है मैम का भी लिंक नहीं जुड़ा हो। मैं थर्ड अपना जो कैंडिडेट है उनको बुला रही हूँ, अमृता जॉनसन। अगर यहाँ प्रेजेंट हो तो प्लीज आप अपना पेपर नाम निवास पीजी कॉलेज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से अमृता जॉनसन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I share my screen with slideshow? Can I share my screen? Ma'am, can I share my screen for slideshow? हेलो मैम, एंटर होइए। Ma'am, we can't hear you. Please unmute. अमृता जी आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। Okay, can I share the screen for slideshow? Yes, you can share. Just a second. Can you hear me, ma'am? मैम आप ऐसे अपने सामने रख के पीपीटी बोल दीजिए ऐसे, क्योंकि वो शेयर नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रीमलाइन में चल रहा है ये भी। ओके Okay. So, should I start now? Should I start or should I wait for ma'am? अमृता शुरू कीजिए आप। Ma'am, you can't see the screen. Hello, Neeta, I'm connected, I think. Can you hear me? Yes, thank you मैम। Yeah. ये अभी अमृता जॉनसन को पढ़ना है मैम पेपर, तो अमृता जी आप अपना शुरू कर दीजिए पेपर आप। Okay. Okay, ma'am. So मैं share नहीं कर पाऊंगी slide, right? हाँ, वो शेयर नहीं होगा। आप अपनी जिस्ट बता दीजिए। मैं share नहीं कर सकती। Okay, ma'am. So okay. I'm starting then. Greeting to all the dignitaries and scholars present here.
I'm highly obliged and feeling grateful to present my paper here on the platform organized by Society. कैसे इतने कम आवाज में? Amrita Johnson वो is इसमें research लगाते हैं scholar जो of ईयरफोन HRPG लगाते College. हैं तो आवाज तेज आती है I'm pursuing my research केबल लगाते under हैं very eminent and insightful research director, ऋषि को Dr. बुला लो Pratap Vijay Kumar, HOD अभी of आवाज पता नहीं Ancient History and Culture of HRPG College, Khalilabad. In the beginning only, ma'am, I request to all the dignitaries to kindly excuse me for any error or tribulation, since it is my first experience to attend as well as to present paper in such esteemed conference. So, coming back to today's conclave, the topic for my paper presentation is Buddhist Sangha, an embodiment of gender neutrality or prejudice, which means Buddhist Sangha has whether worked as epitome of gender discrimination or gender equality. The worth of a civilization can be judged by the place given to women in the society. I think all of us agree that a woman plays an important role in strengthening the dynamism of human civilization. The woman has been naturally a parallel section of the society since its inception, but the society and its institutions have molded these natural provisions into create an unnatural imbalance. Since 2500 years ago, Buddhism created a revolution in India by initiation of Buddhist Sangha, in which women did not many women wanted to join the Sangha and earn for equality. However, they could not get easy access as there was no tradition of assimilation. Therefore, position of women in Buddhist Sangha has been debated for a long time. The main purpose of this paper is to figure out the real situation situation and status of bhikshus. Analysis will also be done of rules and regulations of bhikshu and bhikshuni, and to figure out about discrimination in sangha, and if it did exist, then what were its justification. First, we'll discuss about the admission of women in Sangha. Soon after the Buddha's enlightenment, he formed an order of monks. Later, Mahaprajapati, Foster Mother, and Aunt of Buddha, requested him to establish a similar order for Buddha request thrice. Eventually, Mahaprajapati that the woman must agree to live according to 8 rules that was subordinate to the monks. These rules were not supposed to be followed by male monastics. So that was the greatest difference. Buddha also declared that the Sangha would be weakened by the presence of women within it, and for this reason, they must be controlled by special regulation. Living to but much more comprehensive than the monk's code. The nuns had to observe 84 additional cases of Brahmin men and women recorded in the Vinaya treated the bhikshunis more harshly using shaven-headed strumpets or bows, whereas shaven-headed was not applied to the bhikshus in derogatory manner. Parajika Dharma, a Buddhist scholar, Sufun Lu, introduced 4 additional rules concerning sexual behavior. As we can see in the table, that out of 8 rules, only 4 rules were supposed to be followed by bhikshus. So there only 4 were supposed to be followed by monks. And after 2 years of our basic training period at Sikhama,
woman higher ordination was requested by her from the communities of Bhikshu and Bhikshuni. But questions regarding in very awkward situation. Buddha made the spousal consent compulsory for would-be nuns and parental consent for both would-be monks and nuns. Now, the point which has to be focused over here, that is that the female suppression could be seen over here, as the Buddha had made spousal consent necessary for would-be nuns, but not for would-be monks. Nisagga this type of exploitation was so great that practices. Now, if all the points, if we analyze and if we try to justify the points and the rules which were given by Buddha, first can be justified in such a way like Garuda Mas and male dominant society. We can assume that will favor that group. Second, that is the Parajika Dhammas. The 4 additional rules must have been imposed to have control for pregnancy. Nisagya rule, Mahaprajapati, who took prompt action and made law, that Buddha himself was not knowing, he was not acknowledging the rules which was applied by the other monks in the monastery. Women was this. Amrita, have you finished your paper? थोड़ा वॉल्यूम कम कर। वॉल्यूम दूर कर दूर है। Hello, Amrita, can you hear me? You, Amrita. We can't hear you. Yes, ma'am. Yes. अमृता, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। हेलो, अनामिका मैम, आप सुन पा रहे हैं इनको? No, I can't. हाँ, even I can't hear. Yeah. Amrita, I think there's some problem from her. And I think she can't hear us as well. okay. Amrita, can you hear us? Yes, I can hear you, ma'am. Can you hear me now? So, yes, now we can hear you. Okay. So I was disconnected, just I was concluding my part. Shall I continue now? Yes, you can. You are concluding? Yes, Okay. I'm concluding. Okay. So the prejudices did exist due to impact of patriarchal society, as well as due to the effects of post-Vedic changes in status of women in society. But we cannot even totally deny the fact of embodiment of gender parity. I would say that the woman's position in Buddhist Sangha laid somewhere in the middle of parity or prejudice.
Thank you. Thank you, Amrita, for your presentation. Unfortunately, there was some technical problem and you were not audible for a short period. Our paper is now open for discussion. Any query or comment? Fine. Professor Neeta, you can call the next speaker. Professor Neeta, Yes, ma'am. can you hear me? Please Yes, ma'am. call Yes. the next speaker. Yeah. Okay. Ma'am, the next participant is Nishant Sunil Jodape. He is from Vishwabharati Santiniketan. Ma'am, next participant is Nishant Sunil Jodape. He is from Vishwabharati Santiniketan, West Bengal. Yes, please, Nishant, you can start your paper. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Am I audible, ma'am? Hello? Yes, Yes, you yes, are. you are. Yeah. Thank you so much, ma'am. Respected Anamika, ma'am. And thank to Heritage Society to giving me opportunity for this present this paper. So can I share my screen, ma'am? I make PPT. Hello? Professor Neeta? Hello? Professor Neeta, can you share Yes, his? ma'am. Yeah, he's Yes, asking ma'am. whether he can share his screen. I don't think so, ma'am, because it is streamlined and I don't think someone else is controlling it. So he cannot share the screen. You can say your gist, you can, whatever you want to say, you can share it like that only, okay? Oh, okay, ma'am. Okay, ma'am. No problem, ma'am. Okay, ma'am. My research paper topic is epigraphical evidence in Vidarbha region and related to Buddhism. This mainly Vidarbha region is the in situated in Maharashtra. This is eastern part of Maharashtra. It is a 11 district including in Vidarbha region, that Buldhana, Wardha, Akola, Washim, Amravati, Yotman, Nagpur, Chandrapur, Gondia and Gadchiroli. So this is center part of India. There is so many evidence from related to Buddhism, that stupa, vihara, then epigraphical evidence, then Buddha sculptures, caves, all this evidence found in Vidarbha region from prehistoric time to it is medieval modern time also. This historical evidence found in Vidarbha region. So in my paper I included mainly focus on Buddhism, that inscription from Vidarbha region that related to Buddhism. 10 inscription I included in my paper. One is Devtek inscription, second is Chandara forest cave inscription, third is Pauni, then Pauni inscription of Bharshu Bhagadatta, fifth one is Pauni Chaya Stamba inscription, and then sixth one is Mohadi Mokasa, that name is Kunkhada cave inscription, then Bhadravati inscription, then eighth one is Bhuyari inscription, then 9 is Buddha image inscription of Hamlapuri, then 10 was is Pullar inscription. The first inscription found from this Devtek, this the oldest inscription of Vidarbha region at the Devtek near Nagpur in Chandrapur district in Maharashtra. It is inscribed by Ashoka Dharma Maharaj that date back to 3rd century BCE. The language of this inscription is early Prakrit. The object of inscription was recorded as the command of the Lord Swami prohibited to capture the slaughter evidences of some animal and certain season in Ashokan fifth pillar edict or the maybe throughout the year, and declared some punishment for those who dare and disobey it. The third line mentioned the exclusive officers, this Amachya, who due to may be been to enforce this order. The last line contained the 14th, the donating 14th year, that probably it regnal year which is recorded inside. This text of inscription is Swami Atrapachi Chikambarasa. The second line is Hadanto Bhadanto
Yadots Daso Nidha. And third line is Amachya, and fourth line is Rano Desho, that some part is missing, and Bande. Then second inscription from the Chandara forest cave inscription. This is a Brahmi script, that calligraphical feature indicated according to the Dr. S.P. Dev, former director of Deccan College Research Institute. That inscription belongs to the 3rd century BCE. That text is Vasa Vandalaka Puttasa Apala Sammati Karma. That meaning is the Chandara cave work by Vandalaka's son Apala with permission of Apala. Then second inscription is this Okiyasa. The name of person for making the cave Okiya has been given donation. The language of both inscription is the Prakrit. The third inscription is the Pauni inscription, that excavated at Jagannath Stupa Mount. That period is 2nd century BCE to 2nd century CE. That large number of inscriptions are engraved on the stupa railing and other part of stupa. The all inscription found in the excavation related to donation for the stupa, like Sachi Bharut. These inscription are short and concise. Then fourth one inscription is Pauni inscription of Bharshiv King Bhagadatta. The text of this inscription is Bhararayasya Bhagadattasya Puja Ganpati. The king name of Bhagadatta of Bharashiva dynasty laid a stone inscribed with the footprint of Lord Buddha. The date of this inscription is 1st century CE. Then fifth inscription of this Pauni Chaya Stambha inscription. The inscription is Brahmi script and Prakrit language. The from alphabet formation is have been the 2nd century CE. That's the Siddhana text is inscription is Siddhana Maya Khattava Kumarasya Rupiyamma Chaya Thambo. The inscription of 3 line, the Mahachatrapa Rupiyamma Chaya Stamba. Then 6th inscription is the Mohadi Mokasa cave inscription. This inscription in Brahmi must be a 2nd century CE. That language of inscription is Sanskrit. That Shiva Swamisya Putrasya Grame Pramai. The Pramai village of the Shiva Swami. From the inscription, who know the name of Shiva Swami, but the name of their son is not known. That also the name of Pramai village has come to the light. Then the 7th inscription from this Vidarbha region from Bhadravati cave, the Bhadravati inscription. The language of this inscription is Sanskrit and script is the Kutili Nagari. That at the beginning of inscription in the Mangala Charana, the name of Jina Tai and Sugata used to praise the Buddha and is also wished to protect all. According to the inscription, the king Surya Ghosha, beloved son, fell down from the roof of the palace and died. The Bharsius surrendered to Buddha and he donated the old temple and built Vihara, Vapi, Kupa, Udaya, Sabhabhavana, Chaitya. The age inscription is Bhuayari inscription. The script of inscription is Brahmi. That period of inscription is 225 to 250 CE. That text of inscription is Samaya Siddha Dano. That the meaning of inscription is the donation from development of the place. That 9th inscription is the Buddha image inscription of Hamlapuri. That Hamlapuri situated near to Ramtek in Nagpur district. That inscription presented by Hamlapuri bronze icon carved on the all 4 sides of pedestal. The pedestal has lion legs. The language of inscription is Sanskrit. The time period is 5th century CE. The text of the inscription is Siddham Deya Dharmiyama Sakya Muni Kaso Darato Sangasenasya Yadrate Punya Vasu Ma Tapitro. The translation of this inscription is, this is a wonderful gift given by Bhadanta Sangasena in honor of his parents. This last one inscription is Pullar. That Pullar is a small village near of Bhupur Mandar Road in Nagpur district of Maharashtra. That script of the inscription is Brahmi. Then language of inscription is Prakrit. This period is
2nd century BCE. The text is Vandalasa, that name of donation made by Vandalasa. That I conclude my paper now. That Chandada inscription are very important for reconstruction of the past of the Vidarbha. It is the one of the earliest inscription of Nagpur district. That inscription word like Vandalaka, Putasa, Apala, Okiyasa. The different scholar given different opinion about the meaning of inscription. One will come is Putasa, that Kunghada inscription also having the Putasa word. That means there was a tradition given the father name. Now also the Vidarbha region, some tradition going on after the name of the person given after father name. So from the 2nd century BC, this tradition continues now also in Vidarbha region. The scholar given date of this inscription from 3rd century BC to 1st century history, but my opinion is this period of this inscription is 2nd century BC to 3rd century BC. The Swami, second one is Swami, the Devtek inscription come that Swami comment, no one should violence the animal. That it is inscribed the 14th year of the coronation of Ashoka, that the Chikambari is mentioned in this present inscription. This place is Chikmara near present day of Devtek. The one more important of Pauni inscription are donated given the common people. That means the common people of this region had follow Buddhism at that time. That's most of the inscription of cave inscription, and the cave was very important in Buddhism. It is indicated for the Hinayana Buddhism was practiced in the Vidarbha region. Thank you so much, ma'am. Hello? Indian art. Art and literature. आप मेरा नाम लिख दीजिए डॉक्टर दयाल के किताब. मैम यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अनामिका मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. Paper is now open for discussion. Any question, query? You have taken an inscription in Kutili Lipi as well? Yes, ma'am. One Yes, ma'am. inscription is in Kutili Lipi, yeah. Yes, Which yes, inscription was that? Yeah. It's Bhadravati, ma'am. Bhadravati Bhandak, that Okay. in Chandrapur district of Maharashtra. That is a Buddhist cave is there. Bhadravati inscription. Okay. Yes, yes, ma'am. And what was the date of Chaya Stambhas? That Chaya Stambha is that 2nd century CE, ma'am. 2nd century CE. Yes, ma'am. And here the language is Sanskrit, because once you refer the language is Sanskrit. The language of Chaya Stambha inscription is Sanskrit? No, ma'am. No, Prakrit, ma'am. Prakrit. Okay, fine. Thank you. Professor Thank you, Nita, ma'am. now you can call the next speaker. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, this next participant is Dr. Ratna Singh, member, Heritage Society, UP Circle. Please unmute yourself, Dr. Ratna. Ma'am, Yes. I am Yes, audible. now we can hear you. Yes, you are audible. Thank you. Buddham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami, संघम शरणम गच्छामि. नमस्कार सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, सभागार में उपस्थित सभी सुधीवृंद एवं आभासी पटल पर उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं डॉक्टर रत्ना सिंह, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, हेरिटेज सोसाइटी के ओर से जो ये ग्लोबल कॉन्क्लेव 2022 का सेमिनार है, उसमें मेरे शोध पत्र का विषय है सांकाश्य बौद्ध तीर्थस्थल स्त्रीस्म बुद्ध स्वर्गावतरण. मैम, मैं पीपीटी के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन दूंगी. मैम, पीपीटी एक्चुअली शेयर करने का ऑप्शन नहीं है स्ट्रीमलाइन में. आप प्लीज उसका जिस्ट बता दीजिए, वॉट एवर यू वांट टू से. मैम, हो गया है.
जैसा कि विदित है कि बौद्ध अष्ट महास्थानों में संकास्य महायान शाखा के बौद्धों का प्रधान तीर्थस्थल है। प्राचीन संकास्य संकीसा का पुरातात्विक महत्व बौद्ध परिक्षेत्र में मूलतः उन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों के रूप में की जाती है जिसकी ख्याति गौतम बुद्ध के जीवन की उस घटना से विशेष रूप से प्रभावित हुई जब अपनी माता महामाया देवी को त्रयस्त्रीस्म स्वर्ग में उपदेश देकर भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर इंद्र और ब्रह्मा के साथ अवतरित हुए। महात्मा बुद्ध के उपदेश के उपरांत स्वर्ग से इंद्र व ब्रह्मा के साथ 3 बहुमूल्य सीढ़ियों क्रमशः बहुमूल्य रत्नों, सोने व चांदी के साथ धरती पर अवतरित हुए। यही घटना त्रयस्त्रीष्म बुद्ध स्वर्गावतरण के रूप में विश्व विख्यात है एवं बुद्ध स्वर्गावतरण की भूमि संकास्य अर्थात संकिसा है। बौद्ध कला में प्रारंभ में इस घटना का अंकन सोपान के माध्यम से हुआ तथा गुप्त काल व सारनाथ अन्य स्थलों पर भगवान बुद्ध को मानव रूप में इंद्र व ब्रह्मा के साथ छत्र धारण किए हुए प्रदर्शित किया गया है। फलक 1 त्रयसीस्म स्वर्गावतरण जिससे सांची स्तूप में है और दूसरा जो फलक है वो सारनाथ का है जिसमें बुद्ध को मानव रूप में चित्रांकित किया गया है। संकास्य की पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद की शमशाबाद तहसील में स्थित बसंतपुर गांव के रूप में की जाती है जो एटा मैनपुरी जिला की सीमा पर 27.20 डिग्री अक्षांश तथा 79.20 डिग्री देशांतर पर काली नदी के बाएं तट पर स्थित है, जैसा कि फलक संख्या 3 और 4 में दर्शनीय है। गौतम बुद्ध से पूर्व संकास्य का महत्व जनक के भाई कुशध्वज की राजधानी के रूप में वाल्मीकि के रामायण में वर्णित है, जहां उन्हें सुधन्वा से जीते गए विशाल प्रांतों से घिरे नगर के रूप में बताया गया है। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में संकास्य अर्थात संकिसा का उल्लेख करते हुए बताया है कि संकास नाम के व्यक्ति ने संकास्य को बसाया होगा। पाणिनि के इसी कथन को कौमुदीकार भट्टोदी दीक्षित ने भी लिखा है। संकासेन निवृत्तम संकाश्यम संकाशा विभूषः संकाश्यम। ईसा की 7वीं शताब्दी में जिस स्थान को फायान ने सांकास्य बताया उसी स्थान को वेंगसांग ने 8वीं शताब्दी में कपित्थक बताया। आज वर्तमान कंपिल से संकिसा और कथिया कपित्थक 20 से 22 मील की दूरी पर है। इससे सिद्ध होता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी में संकिसा अपने पूर्व रूप में था। बौद्ध धर्मावलंबी सम्राट अशोक ने बुद्ध स्वर्गावतरण की सीढ़ियों की सत्यता को जानने के लिए कि ये सीढ़ियां पृथ्वी में कितनी गहराई तक हैं, लोगों को उत्खनन व जांच के लिए नियुक्त किया। वे तब तक खुदाई करते रहे जब तक कि वे पीले झरने अर्थात पृथ्वी की नींव तक नहीं आ गए, किंतु नीचे नहीं पहुंच पाए। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में विश्वास व श्रद्धा रखते हुए सम्राट अशोक ने त्रयस्त्रीष्म के इस पवित्र स्थल की सीढ़ियों की भूमि पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया और उसी के समीप एक स्तंभ का भी निर्माण करवाया जिसकी स्थिति विसारी देवी मंदिर को माना जाता है और समीप ही अशोक स्तंभ भी स्थित है। फलक संख्या 5 स्तूप टीला और फलक संख्या 6 विसारी देवी के रूप में और फलक संख्या 7 अशोक स्तंभ लाट के रूप में यहाँ दर्शनीय है। 1842 ईस्वी में संकास्य की पहचान करते हुए 1862 और 1876-78 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने संकीसा के विभिन्न स्थलों को चिन्हित किया और उत्खनन कार्य भी करवाए। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री लखनऊ तथा अन्य संग्रहालयों में सुरक्षित है, जिनमें पत्थर और मिट्टी की कलापूर्ण मूर्तियां, चांदी व तांबे के सिक्के, मनके, अभिलिखित मोहरें, पुराने पासे आदि प्रमुख हैं। फलक संख्या 8 बुद्ध मृणमस्तक के रूप में, फलक संख्या 9 नारी मृण मूर्ति के रूप में, फलक संख्या 10 संकिसा प्राप्त सिक्कों के रूप में हमें दर्शनीय है। 1955 में बीबी लाल ने संकिसा में चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति की सूचना दी। 1955, 96, 97 ईस्वी में पहली बार संकिसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दिल्ली स्थित उत्खनन शाखा के अधीक्षक B.R. मणि पुरातत्वविद के रूप में वैज्ञानिक ढंग से पुरातात्विक उत्खनन कार्य करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप संकिसा के प्राचीनतम सांस्कृतिक स्तरों के रूप में निम्नलिखित कालखंड उद्घाटित हुए, जो इस प्रकार हैं। काल 1 चित्रित धूसर मृदभांड काल लगभग 9वीं शती ईसा पूर्व से 6ठी शती ईसा पूर्व। काल 2 उत्तरित कृष्ण मार्जित मृदभांड काल लगभग 6ठी शती ईसा पूर्व से 3री शती ईसा पूर्व। काल 3 शुंग काल लगभग 2री शती ईसा पूर्व से पहली शती ईसा पूर्व। काल 4 लगभग कुषाण काल लगभग 1ली शती ईसा पूर्व से 3री शती ईस्वी। काल 5 गुप्त काल लगभग 4थी शती ईस्वी से 6ठी शती ईस्वी।
वर्तमान में संकास्य अर्थात संकीसा में बौद्ध धर्म को मानने वाले विभिन्न देशों यथा कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, जापान आदि के द्वारा भव्य मंदिरों और बिहारों का भी निर्माण करवाया गया है। इन बौद्ध मंदिरों में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। ये बिहार व मंदिर उन देशों में भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के आस्था के प्रतीक हैं, जिनको उन देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा बौद्ध धर्म के बुद्ध के त्रिश्म स्वर्गावतरण भूमि संकीसा पर निर्मित कराया गया है। फलक संख्या 11 में कंबोडियन मंदिर है और फलक संख्या 12 में म्यांमार मंदिर है, जो अत्यंत ही सुंदर है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आज संकास्य अर्थात संकीसा बौद्ध परिक्षेत्र के सुदूर कोने पर स्थित होने के कारण अपेक्षित ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है, किंतु अभी भी समय है कि इस रामायण और बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल पर विस्तृत कार्य योजना के अंतर्गत उत्खनन अन्वेषण के कार्य को संचालित करते हुए नवीन तथ्यों को उद्घाटित किया जा सके। अभी हाल में ही जनवरी में 2021 में बरहुकाबाद के बौद्ध तीर्थस्थल संकीसा में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ करने के साथ ही जिले को 100 करोड़ की लागत वाली कई परियोजनाओं के सौगात दिए गए, जिससे आने वाले समय में संकीसा के विकास के लिए कारगर साबित होगा। धन्यवाद। Paper is now open for discussion. Any comment, question? Dr. Singh, have you visited the site? यस मैम, मैं फर्रुखाबाद में रहती हूँ और मुझे बहुत बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मैम। और अदरवाइज आपने को जो आर्ट में इनका डिपिक्शन हुआ तो कहाँ कहाँ का आपने किसी म्यूजियम या उसमें आपने देखा है डिपिक्शन को? नहीं मैम, साइट वर्क बिसारी देवी किला है, उसके ऊपर जो अशोक के समय का बनवाया हुआ स्तूप है, उसी के 10 बगल में ही अशोक स्तंभ का टूटा हुआ हस्तशिल्प है। और लखनऊ म्यूजियम में वो जो बुद्ध के मृण शीर्ष हैं, मृण हैं, वो सब रखे हैं। ये जो सामने बैठा है कल बुलाइए क्या ना आनंद जी को आशुतोष के पास। मैम यस, हेलो मैम। हाँ हेलो नीता बोलो मैम। नेक्स्ट कैंडिडेट बुलाऊं क्या? हाँ हाँ, या यू कैन कॉल हिम। Other candidate is ma'am Inder Chaudhary, National Chung Cheng University, Taiwan. If you are present, please read your paper. इंदर चौधरी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक शायद म्यूट है। Oh, sorry. I'm extremely sorry for that. It happens sometimes. So I want to thank Heritage Society and the concerned sponsor who are able to make this event possible, and I also want to thank Dr. Anamika Roy, and I'm happy to see her. Maybe she won't remember me. I met her one time, but it was like 5-6 years ago. I think in Allahabad University itself, and I also remember one of her paper in my master's at Nalanda. So my archaeologist professor was Dr. Garima Kaushik, if you remember her. So she introduced to your work to us a lot. So I'm really motivated to see you here. Thank you, ma'am. So I will start with my work. So my PPT is basically on. I'm sorry that I cannot share my PPT, but yeah. My topic is the application of Buddhism. So what we are doing here is that we have a lot of literature, a lot of work have been done, but what is the application of Buddhism? How can we apply this to help a lot of people, and what is happening in the world? So there is one new practice which is very new to Buddhism itself,
It is called Contemplative Psychotherapy. So in my presentation, when I use Contemplative Psychotherapy, I will use a term CP. So it is very easy to go on. So what is CP? The practice of CP was kind of a dialogue between the Tibetan Buddhist master Chogyam and the Western psychologist and psychiatrist. So from that debate, this contemplative psychotherapy, this CP came out, and the CP integrates medical mindfulness, Buddhism, and Western psychology and counseling skills. So there was one meta-analytic model on CP, where it was found that 30% of the difference in psychotherapy outcomes are given to the relationship between the client and the psychotherapist. 15% is the technique used by the psychotherapist. 15% is the expectancy effect, that it's like they say something and to the client to make him feel good. So how much impact is the psychotherapist able to make to the client? And 40% of the outcome of that model was given to the factors outside the therapy, like sometimes client is not able to come for the therapy. So such events also contribute to the counseling. So so the medical, there are many factors, but as I cannot share my slide and we have like not that much time, so I will be just go through like very fast. So Dr. Arvinda Chaudhary, we have time because one of the speaker didn't turn up, and we are not running behind the schedule, so you can take as much time as you want. So you can exceed the designated 15 minutes. Okay. Thank you, ma'am. You can sum up in 5 minutes, please. Okay, Inda Chaudhary ji, sum up in 5 minutes because we have to start some other program at 4:30. So please give your gist. Ma'am, it will be okay? Actually, in I think in the brochure it was from 2:30 to 5:30. So 5:30. Okay. Then let him continue that. You can check it. It is from 2:30 to 5:30. You can check it. I don't. They have given us 4:30, ma'am. Yeah, it is 5:30. Okay. You continue with that. Continue. Okay. Thank you. So I am using so many terms which are which are not known to is not very common. So I will try to define those terms. So the first term is what is medical mindfulness. So medical mindfulness is the intentional cultivation of non-judgmental present moment awareness through a variety of practices. Basically, it is sitting meditation. So mindful practices, the medical mindful practices cultivate the ability to be present, curious, and be aware. And over time, these mindful states, like the curious, present, and aware, can evolve into mindful traits. And these are the things which the psychotherapists aim for for that, so that the client is able to evolve into these mindful traits from the mindful practices. And medical mindfulness can be applied in psychotherapy by teaching mindfulness to clients. Mindfulness is basically a Buddhist meditation kind of a thing. By extending lessons to the mindfulness, to the theory and practices, basically the debate, and by and sometimes if the psychotherapist has a license, he can give some sort of small kind of drugs like medicine to the client.
So we are discussing so much about the psychotherapy and all those things. So where does Buddhism come into this? So this whole model of contemplative psychotherapy is based completely on Buddhism, the Buddhist views of mind and experiences. So CP embraces Buddhist theories to understand how to reduce suffering. This Buddhist theory base serves as a conceptual framework to guide therapy and helps to contextualize and deepen medical mindfulness practices within a specific philosophical view. It also serves as a collection of therapeutic ideas that can be shared with clients as interventions. CP integrates Buddhist frameworks to guide mindfulness awareness practice, like uproot, remedy, and then transform cognitions, feelings, behaviors, which produces suffering. Provide a developmental scaffolding for the development of pro-social states and traits. Transform the self and promote experiential integration of present moment awareness in all experience. So CP's Buddhist theory base is grounded in the uh, Karma Kagyu and Nyingmaya schools of Tibetan Buddhism, and I want to add this. This is not only like Tibetan Buddhism. It takes root from all the schools of Buddhism, and yeah, that's the main point which I want to say. And now we will go into the application. And for example, if a client is suffering from some ailment regarding self issues, so how does this theory come into play? So in CP, the basic theory of pathology is that suffering derives from clinging to a solid or a separate sense of self. So in CP, the goal of therapy is not to destroy the self, but recognize and relax into its fluid and open nature, and thus discover the intrinsic wisdom. So the 3 marks of existence are suffering, impermanence, and non-self. So these 3 marks of existence, each counter with the 3 aspects of experiences, provides an opportunity to either turn toward openness or to deepen our struggle with the way things are. This existential choice is the pivot between suffering and freedom from suffering. Yeah. Now, the next example I want to give is about 4 noble truths. And we all know what are the yeah, basically it's very general. I will just say it very fast. First is the noble truth of suffering, the arising of origin of dukkha, the cessation of dukkha, the way leading to the cessation of dukkha. So how does this contemplative psychotherapy CP comes into play over here? So the way it sees 4 noble truth is like the logic behind it. We try to understand the logic and tries to make the client also understand the logic. So the first truth is like seeing the reality of suffering, and that suffering happens and will happen to everyone present on this earth. So this kind of logic is very important for the client to understand. The second truth is that suffering has its own origin, its origin in the sense of separate and permanent self, which humans habitually uh, attempt to protect and cherish at all cost, despite it is not being a solid thing at all. The third truth is the possibility of an end to this suffering. The third truth. The fourth truth teaches the path and to end suffering in the form of eightfold path of right meditation, right mindfulness, right intention, right view, right speech, right conduct, right livelihood, and right effort, and as well as following the rest of Buddhist practices. So there was a very famous quote by the Nobel Peace winner on Thich Nhat Hanh, and I'm really sorry, and I really
feel upset that he has passed from this world in this year only. So he said that a major emphasis in Buddhism and contemplative psychotherapy is cultivating beneficial traits and activities, and abstaining from behaviors and thought patterns that lead to more confusion and suffering. That was a very deep thought, and I really admire his work. So, and there are many more things which I can go on, but I think, it would be better, if I would be able to present my slides, that would be even much better. But it's okay. I will just move on. So, what is the important component over here? The important component over here is the intrinsic wakefulness. So the Tibetan Buddhist heritage is the intrinsic wakefulness is an existing within the most painful and confused states of mind. The 5 Buddha families are a view of basic wisdom of the world and of emotions, and they constitute the contemplative psychotherapy theory of personality in different modes of wakefulness and confusion. So this view of non-dual realization in the Tibetan tradition of Mahamudra and Dzogchen serve as the theoretical and practical basis for going further along the path of brilliant sanity. So the 3 theories in CP are the brilliant sanity, Maitri, and exchange. So I will just be very precise and very to the word. So the first part is the brilliant sanity, and the core theoretical perspective of CP is the view that all beings are fundamentally sane and awake, and wisdom underlies and precedes all suffering and confusion. This is synonymous to the basic view of basic goodness, in which intrinsic wakefulness and dignity are the primordial nature of human experience and basis of enlightened society. It is also termed as intrinsic health, which means the Buddha nature, and it is characterized by openness, clarity, and warmth. Then comes Maitri, and everyone, I think, in Buddhist studies, or it's a very common word, Maitri, and when translated into English, it comes to be loving kindness. So over here in the CPC's Maitri as a sense of unconditional friendliness toward oneself and one's client and one's experience. Such an attitude creates an environment of hospitality in which genuinely therapeutic interactions can take place and clients can connect with their own dignity. The last part is exchange. So over here, this exchange is based on the understanding that humans are independent, non-solid, and deeply connected. Humans influence each other in non-verbal ways, and this phenomena can be used to advantage in psychotherapy. Exchange is similar to the other notions such as resonance and embodied empathy. So now the main practice of contemplative psychotherapy is the mindful awareness practice. So the core, basically, I'll give an example of sitting meditation. So in the benefits of medical mindfulness or the sitting meditation over here have been explored in a lot of literature on mindfulness, and emphasizes basically on the approach of mindful practice. So the term mindfulness has been applied to a variety of different practices, states, traits, and dimensions of contemplative practice experience. The terms mindfulness, awareness, shamantha, and vipassana refer both as specific approach to sitting meditation practice and mental capacities thus developed. These practices are 2 important aspects of sitting meditation in the Buddhist tradition, and they form the fundamental meditative training of the contemplative psychotherapist. So over here, there is a very specific Western point of view, which has articulated multiple possible mechanisms of actions of mindfulness, including attention regulation, body awareness, emotion regulation, and change in perspective on self.
continuation of development processes, self-regulation, values, clarification, cognitive, emotional, and behavioral is non-stop. A lot of what Western perspective have been seen there. So these postulated mechanisms of action are functionally are operational of Buddhist description of meditative path. So the Buddhist point of view is that mindfulness awareness practice can stabilize the mind and clarify, deconstruct, and transform cognitive distortion, dualistic clinging, emotional upset, and patterns which upsets, and cultivate the non-dual experience of the nature of mind. The Shamanta aspect of sitting meditation pacifies the mind and emotions, and Vipassana aspects brings the insight into the nature of the mind and experience. So now I will conclude my study. So my study is like basically I'll end up into asking 3 questions which I want to go on. That is does medical mindfulness training help people become better therapists? नमस्कार मैडम। नमस्ते, कैसे हैं राजवंत जी? बढ़िया बढ़िया। आपका सेशन हो गया क्या? जी जी जी। ठीक, चलिए। या फिर हम लोगों का भी 2 स्पीकर बचे हैं। हाँ, यू कैरी ऑन। आपको भी आना चाहिए था बुद्ध की भूमि पर। हाँ, बुद्ध की भूमि पर बहुत बार आए, चलिए फिर आएंगे। नहीं, इसी बहाने लुम्बिनी और पिपरावा ये सब घूम लेती। हम गए थे जब आपके उसमें आते थे सेमिनार्स में, तो जाते थे वहां पे लुम्बिनी वगैरह, जा चुके हैं। आप मैम को बुलाते रहेंगे हम लोग, और आएंगे मैम भी। मैम एक अच्छे ओकेजन पे फिर बुलाऊंगी मैं आपको भी। प्लीज ओके डॉक्टर चौधरी, यू कैरी ऑन। या So basically my conclusion is based on 3 questions which I want to explore in my further work. That is does mindfulness training help people become better therapists? Does mindfulness training supported by contemplative psychotherapy improve therapeutic outcomes? Does contemplative psychotherapy outperform other types of medical mindfulness training? And the answer, they have to be still work upon. And one thing which I want to share is that the importance of this, where can we apply this factor, this contemplative psychotherapy in the modern world? So I have two good examples. First is the pandemic. As this pandemic is getting slowed down, there are a lot of people who have lost their loved ones or are still facing this pandemic in not a good way. So they have this kind of a post traumatic effect. So this therapy this Buddhist mindfulness can be used over here. And the second example is the Ukraine-Russia war, which is we are seeing it in news. So when this war is over, there would be a high increase in the patients which will have a lot of psychological ailments because of losing their loved ones, going away from their home, and seeing all those things. So these are the application factors which I'm seeing that these are where we can apply this work. And thank you for giving me the opportunity to present my presentation. If there are any questions, comments, and any advice, please. Thank you, Dr. Chaudhary. Thank you, ma'am. Very brief question, because the speaker has taken 25 minutes, so very brief questions. Professor Neeta, you can call the next speaker. The last speaker of today is ma'am Nguyen Thi Ha, and I think she's from Vietnam. Nguyen ji, you can please start with your paper. Yes. Namaste. Can you hear me? Yes. Yes. Hello. Yeah. Yeah. It's okay. Namaste. Namaste. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. My name is Nguyễn Thị Hạnh.
I'm researcher scholar in Buddhist study, philosophy, and comparative religion in Nalanda University. It is a pleasure for me to be here today to speak about my topic with the title Survey about the Suyata story and her stupa. Um, Suyata's story is very important and significant in his story of Buddhism. She offered gruel rice meal to the Prince Siddhartha after 6 years in quest of salvation in village of Uruvela on the bank of river Niranjana. Suyata was character closely associated with the life of the Buddha. She had been mentioned by quite a few different names by later writer. And this chain of names over time may also related to the various local linguistic influences. In my research, I will survey about the story of Suyata through the sutta in Buddhist tradition and in the depicting of various Buddhist sites such as Ajanta Cave, Ellora, Nagayuna Konda, and Sanchi Stupa. About the stupa of Suyata is based on uh, the archaeologist Alexander Cunningham in Archaeological Survey of India. For report made during the years of 1862, 1863, 64, and 65, Volume 1 and the book Rectangle Record on the Western region was depicted a stupa that is a commemoration place that Suyata was living. Following Buddhist dictionary of Pali proper name, the word Suyata literally means well-born or good birth. There are 10 definitions for the word Suyata. However, the sixth one is the person who offers gruel rice meal for the Buddha. This is the person that I have to study. In Theravada tradition, I concentrate to survey some sutta with mention about the history of the Buddha in Pancha Nikaya. However, there are no place mention about the story of Suyata. In Nidana Katha of Buddhaghosa on the 5th century CE is the material related to the history of the Buddha. And this is the essence foundation so that Hajime Nakamura combined the book Gautama Buddha, a biography based on the most reliable text, starting with the describing about the previous life and the birth of the Buddha. Eventually, this book describes in the detail about the offering rice meal of Suyata. In Mahayana tradition, I investigate through Chariya Nidana, Lalita Vittara Sutta, and Buddha Charita. It can be said that the origin of the story of Suyata is not officially included in the canon by Pali literature. However, based on the similarity in detail of history between the Lalita Vittara Sutta and the Nidana Katha text, the same view of abandoning of ascetic part of mortification. It was convinced that the Bodhisattva had consumed food normally after 6 years of asceticism. Of course, with the various exotic body, raw meal rice is a reasonable choice. Um, Suyata's story not only was depicted in Buddhist scripture, but also depicted in various Buddhist sites such as Ajanta Cave, Ellora, Nagarjuna Konda, and Sanchi Stupa. In Buddhism, the person offering the food for the monk or the Buddha is not too much important, and it's not easy to remember the name, especially when they offer once why he has not yet certified and there are not many people around. This may be the reason why famous historian wrote about history of the Buddha did not include the event in their own history, such as in the case of Stuman in the book, the historical Buddha, or in the case of Mahathera Narada in the book, The Buddha and His Teaching.
Let's go to another part, survey about the stupa of Suyata. Indian tourism assumes that the current bridge stupa on the eastern bank of Fangun River is the stupa of Suyata. This affirmation based on the archaeological information in Archaeological Survey of India of Alexander Cunningham and the record of Sanyang. Based on the archaeology Cunningham and the record of Sonyang, there was a stupa erected to commemorate the place where Suyata lived. And the stupa is located in the southwest of the Bodhi tree, where the Buddha attained enlightenment. Moreover, in a detailed description map, Cunningham identified the location of Bodhisattva using murals by Chi on the map of Bodh Gaya area on the west bank of Phangu River. Thus, if the stupa of Suyata still exists to this today, it must be located in the west bank of the Niranjana on the same side at the Great Temple. On the east bank at it today, thus the stupa is considered to be the current Suyata, whose stupa is actually the more information from archaeology Cunningham to the eastward of the Bodh Gaya on the opposite bank of Phangu River and immediately to the north of the village Bako, there are ruins of the last bridge top with a stump of a sandstone pillar at short distance to the northward. The ruin mound with Katani is 100 feet in diameter as base and 50 feet height. It is built of usual large brick, 15 multiplied with 10 and 3. Several excavations have been made in its research of brick and treasure. About 70 years old, numerous lectures impressed with the figure of the Buddha were found excavation in the top. My information was, however, they were derived from the Mahan himself, and Bako is only half a mile to the eastward. It could have been more correct to have described the locality as near instead of that Bodh Gaya. Detailed information about the brick tower of the archaeology Cunningham shed some light on non-Buddhist references and the entire paragraph. It did not confirm any detail related to Suyata. Using aerial photo of the Google map, the Suyata stupa appear very big and clear, although not measured by data, but by direct sense from aerial photo and field survey in these two places. The current Suyata stupa is about the same size as the commemorative stupa on the cremation site of the Buddha at Kusinaga. From early information of Fasong to the careful record of Sonya, it had been proved that around the Buddha enlightenment, there are many stupa of the previous Buddha as well as the future Buddha. The location of Suyata stupa not too far from the stupa where the Buddha enlightenment. Reportedly, in the final report in 2006, the government of Bihar state is planning cluster of a monument on the east bank of Phangu River such as Suyata Dhamaranya and Suyata Kuti Stupa to draft a city master plan. This information is even more troubling for me as the origin of brick stupa have so far not been clearly determined. Rereading the first introduction on the blue side of the current Sujata Tower, so this brick stupa was constructed to commemorate the resident
of Suyata, the maiden who offered milk to the Lord Buddha. In connection with the information recorded by Sonia and the results of field survey by archaeologist Kuninham on the site of Suyata Stupa on the western bank of the Niranyana River, I assume that it is more authentic information than the information given by Indian tourism industry. With the limitation of the document, I hope that if there is a cooperation and additional material from many researchers, the stupa that is believed to be of current Sujata will be unraveled from the legendary myth. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you, Ms. Diganthi Ha. Professor Nita, this was the last paper. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Paper is now open to Ms. Diganthi Ha's paper is now open for discussion. Anyway, since it was quite innovative paper. Any question, query? Right. So, मैडम लोग को बड़ा करना है ना मुझे किसी को कुछ पूछना है लैंग्वेज इज नो बैरियर आप किसी भी लैंग्वेज पूछो इट विल बी ट्रांसलेटेड इन केस यू आस्क इन हिंदी प्रोफेसर नीता विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश ठीक है So I think there were 7 papers in this session. The first paper was by Mr. Suresh Kumar Singh, ओंकार और उसकी महिमा. श्री सिंह ने बहुत ही वैदुष्यपूर्ण अपना संभाषण दिया था. It was quite scholarly and he went into detail कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये ब्रह्मा के मुख से जो ओम शब्द निकला और उन्होंने कहा नाद ध्वनि अक्षर शब्द इससे जो प्लीज स्विच ऑफ योर माइक देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस हियर. और इन्होंने इसकी तुलना की भूत भविष्य त्रिकाल से संसार सब जो है इसी ओम पर ही निर्भर करता है. मार्कंडेय पुराण का भी आपने उदाहरण दिया और पूरा संस्कृत साहित्य और वैदिक परंपरा औपनिषदिक परंपरा सबका आश्रय लेकर के ओम का महत्व का विश्लेषण किया. द सेकंड पेपर वाज बाय डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, वैदिक वांग्मय में शिल्प शिक्षा. She started with etymology pish कि कैसे पिश से शिल्प यह शब्द बना है. And then unfortunately I was disconnected in between her paper और फिर उन्होंने बड़े विस्तार के साथ जो है वैदिक वांग्मय में जो शिल्प की जो शिक्षा है उसके विषय में बताया. मेरे because I missed her paper, I hope she has referred to Shatapad Brahman and all. The most prominent thing about Shilp in Vedic Sahitya is that whether it was religious or it was secular. Professor R.N. Mishra has read a paper on it, a rather presidential address in Indian History Congress. So if she has not gone through that paper, she should go through that paper. The third paper was by Dr. Amrita Johnson, Buddhist Sangh equality, gender equality, and she was she herself was disconnected in between, and she has raised the question how women were introduced into Buddhism. That the things are quite well known and they're debatable. From Uma Chakravarti to Sarao, a lot of people had worked on this, and then she has used the terms like prejudices and
patriarchy and gender parity, these are strong words, but they should be taken into its context and they should be explained properly. The next paper was by Dr. Nishant Sunil Zodep. He has given the epigraphical evidence of Vidarbha region regarding Buddhism. And he has taken the inscription, Devki inscription, Chandal inscription from Pawnee, Chaya Stambhas, and he's taken a broad time bracket from, I think he has referred to one of the inscriptions of Ashoka's period. It was a personal, private inscription. So he has taken from 2nd century CE to Kutili Lipi, that means 6th, 7th century CE. And for the inscriptions of 2nd century CE, he says that the language was Sanskrit. If indeed the language was Sanskrit, then it's information, because in northern India, when in this period we find the inscriptions of Kushanas, the language still was Sanskrit influenced Prakrit. From Gupta period, we find inscriptions in pure Sanskrit from northern India. Then the next paper was by Dr. Ratna Singh. इन्होंने संकश बौद्ध तीर्थ पर अपना प्रबंध पढ़ा. इन्होंने बड़े विस्तार के साथ बताया कि कैसे वहां पर सीढ़ी से जब गौतम बुद्ध जो अपना स्वर्गारोहण किए थे, और वहां पे है कि इन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया था, तदुपरांत वो नीचे आए थे. उसको प्लेस को उन्होंने it has already been identified. उन्होंने संकस जो मॉडर्न है उससे इन्होंने आइडेंटिफाई किया. बुद्ध के डिसेंडेंट ऑफ बुद्ध ऑन हेवन, वो ये बड़ी पॉपुलर थीम है. ये अर्ली बुद्ध स्टार्ट में एवरीवेयर मिलती है, एंड it is taken as one of the miracles shown in early Buddhist art. So Dr. Singh, when next time she will work, I think she should take the depiction in art as well. The next paper was by Dr. Arvinda Chaudhary. He gave a new dimension to the discussion, because he has come up with something very new for us, application of Buddhism in CPT, Contemplative Psychotherapy Dialogue. It is CPT, and he has shown how can we connect CPT with Buddhism, and he said that it is not only the dialogue of Tibetan Buddhism, it is the core Buddhism. And then he referred to the meditation Vipassana, which is very popular and in his conclusion he showed that how this CPT can be helpful in pandemic and war-like situation which Ukraine and Russia is facing. The last paper was by Nguyen Thi Ha. She had tried to identify the Sujata Stoop reported by General Cunningham, and she had taken the help of literary as well as archaeological evidence. And when it says that this stoop was somewhere that the place near the enlightenment of Buddha, that Bodh Gaya, and she identifies it not near Niranjana river, rather Falgu river, east of Falgu river. That's all. So I am thankful to all the participants and Professor Neeta for making this session enjoyable and academic. Dr. Neeta, mic is yours now. Hello, I'm audible, ma'am? Yeah, you are. Yeah. Ma'am, thank you so much. Thank you so much for such a nice session. Actually, I think almost all the sessions are over half an hour before, but our session was continued till I think 4:45. And we are very lucky to have Professor Anamika Roy in our session, and she has given us the brilliant, I can say, views on the papers, whatever papers people have read. So, ma'am, thank you so much for being with us. We are so much enlightened, and I think those who have read the papers, they have also got some ideas, some new vision towards the paper. So thank you, ma'am, and thank you all. And thank you.
Head button.